All right. My name is Javad Qureshi. I work as a general manager for robotics labs. It's our sixth year in the market, and time really flies, swiftly. We never thought that um, this is going to be such an amazing venture. We started off with just one passion that we should be having an institute for STEM education, science, technology, engineering, and maths, and there should be a place for the kids. Apart from activities like horse riding, maybe reading, or maybe taekwondo, there should be something where kids can come. They can do a hands-on activity with some robotic kits, some math courses, but the skill set building maths, your reflexes, super fast reflexes, um, accuracy, development of active memory, and active listening skills. That's the most vital part. And initially, when I actually applied through an AdWord that they wanted to, I came for a different position. But when I actually got in touch with the directors of this project, so they said that there's a project that will be run and managed by just one individual, and we are not finding the right guy for the project so far. I was like, okay, what's the project like? And when they discussed with me, because I came from the corporate world, I worked for the airlines, for Middlesex University, UK, and I had a different perspective. In my majors was like marketing, and I never thought that being on this project I would be doing some guerrilla marketing strategies. Um, in 2011, we established this place, starting from June. So, and initially, our prime focus was on camps, summer camp and winter camp, and whole year round R&D projects, research and development. We would actually, um, you know, do some discoveries, make some um, amazing projects for the kids, and would actually launch them in the camps. Our first camp in 2011 was a major success. There were 200 people lined up outside, and I had to come on a Sunday to actually get all the things done because we never had the capacity. We didn't have the capacity to actually cater everybody. So we had this week, camp for a week, and we had the 3 weeks. So there were let's say 7-8 sessions going in that winter camp, and it was awesome. The summer camp we had at Royal Rodale, and it was success. So in winters, it turned out to be a great response. And then we actually did some newspaper marketing. There were initially ads in the newspaper, quarter page ads, and people used to get really, interested to send their kids. There were families who were even coming from Hyderabad every day and used to do the courses. So it's like at the end of the summer camp, I mean, what was the reaction of parents and the kids, and which up the It feedback was did you it get? was a wow factor effect. They were overwhelmed by our presence, and they were so excited that a lot of them they even continued as an after school activity. You know, they continued as an after school activity. They used to come over here between 3 to 6 p.m., do their courses 1 hour or 2 hours, and they used to go back. So but that was not serving the purpose. We were not able to cater masses. We were not able to engage the schools in the projects. There was nothing done on that level. And trust me that at the day end, you have to actually, when you revisit your decisions, you have to come up with strategies for longevity and sustainability. Okay, so um, then we thought to um, approach the schools. We approached the schools, had lots of meetings. There were um, tens of rejections. People used to say us that, guys, you just a new company, a new vendor. What if you people disappear with the money and stuff? We said like we will take post dated checks. We were like lenient back then. So there were troubles, and it wasn't really comfortable for the schools in a new company coming in with robotics and some crazy courses. For them it was crazy, and there were some articles written in the newspaper that says a company that claims they will teach programming to a 5-year-old, how that is possible, with a question mark. So we were concerned, and we called those people here. We showed them that these are block-based programming softwares that's specially been designed for the kids after doing a research on 20, 30,000 students in the western US. So
they were like, oh wow, this is the thing. And some of them, we even invited their families to go and get a flavor of this. Even if myself and you, we try to do mini bots, um, most exciting project for a younger, my first robot that I called, it's really interesting. Even if you were trying to program it, you will enjoy it. Drag and drop options. Plus, you have to match the gears properly. Have to, install the sensor and motor correctly. And then in order to move it differently, in order to move it technically, in order to build logic, you have to actually play around with that software. So we are developing that logic, object orientation, looping. We give that kind of feeling to the child's brain. They know there's something happening. This is the factor. Okay. So we locked our schools. We locked our first school in April, May 2012. And since then, we have conducted field trips as well. There were schools, those who were not really comfortable sending the kids out to field trip to museum, Pepsi factory, English biscuit, or somewhere else. So we actually proposed them that, why don't you have a trip of robotics at robotics labs, field trip, and it's safe. It's a high tech facility where kids can come and they work on the robots. The idea was really interesting for them, and we used to charge them a small amount, and they used to come here. Let's say 45 kids in a van, 35 kids in a van, maybe a class or two classes, and we used to have back-to-back classes. And even for that, we have made field trips for 34,000 students. That also included the deaf and dumb. I'm sorry to say we shouldn't be doing the word, but that is DEFS. There's a German person who's running the show, Family Education Service, where actually they cater the Yeah, deaf students. Sarah. Yes, yes, yeah. And then there were schools for the blind, IDRU, and then TCF Foundation. Then there was Citizens Archive of Pakistan. All these schools, all these institutions actually had a flavor of robotics, and some of them even had a flavor of mind maths. And we discovered ourselves more, did more R&D research. We developed Android game development. We moved from Apple's platform to Android's platform, and then after that we came up with our great course of mind maths. That was a game changer. And mind math, around about 350 students are registered in mind math as an after school activity. They come during the week from 3 to 6, and on Saturdays from 10 in the morning to 5:30 they're here. Even just on Saturday the attendance is 200 plus students, because a lot of people, they have so many activities, they prefer Saturday. um, Now we have pretty much 21 schools that we teach robotics. We go as far as Gulshan Iqbal. We go to Al Azhar Gardens of Fura Goat. We go to North Nazabad. We go to PCHS, and we are doing these alliances with schools. Where there's a school in PCHS called Starlings, and they did alliance with us, and we are teaching their 230 students at their premises. We're teaching robotics, and we have mutually agreed, and they give us their campus for summer and winter camps. So a lot of people who have trouble coming to DHA, they can easily go there, from Gulshan, Malir, North Nazabad, and different areas. Yeah, so that's the bigger picture. Yeah. Okay, last question because we have covered almost everything. What piece of advice would you give to our younger generation? The piece of advice I would love to give to the younger generation is that discover your potential, do whatever you want to, engineering, medicine, music, or you want to be a teacher, go with your passion. But in a learning age, go for STEM education. STEM education is actually Okay, so what piece of advice would you give to our younger generation? the piece of advice that I would love to give to the younger generation is do whatever you want, be it engineering, medicine. You want to be a scientist, you want to be a nuclear scientist, or you want to be a geologist. That's fine. But
in your core age of learning, in your teens, in your primaries, in your elementary schooling, go for hands-on activity, go for STEM education. STEM education enables you to discover your potential more. Even if you're going for medicine, you would have a knowledge of robotics. You would get to know how a robot performs. Because the biggest dilemma is, even if you ask somebody the definition of robotics, they will give you, some strange lines. Some people would not come up with the real definition. Some people would make it so complicated that it would be, unnecessary and won't be used. A normal person won't be able to comprehend that. We teach kids that anything that has a sensor and that can be programmed is a robot. We keep it very simple. So whatever you do, channelize your energy, do hands-on activity, because that's the best learning age, and you will discover your potential. Thank you. It was nice. You're most welcome. बुनियादी बात तो ये कि मैंने नापा से तालीम हासिल की है। मैंने डायरेक्शन में मेजर किया था, डायरेक्शन पर स्टेज, और उसके बाद फ़ारिग होने के बाद मैं वहाँ से वहीं पे काफ़ी अर्से रेपर्टरी में एक कोई 1.25 साल तो मैंने वहाँ के एज एन एक्टर डायरेक्टर जॉब की। उस ज़माने में रेपर्टरी इस तरह से कायम थी कि हमको तनख्वाह दे के जो है वो अदाकारी कराई जाती थी। उसके बाद फिर वो उन्होंने डिज़ोल्व कर दिया, और उसके बाद फिर प्रोजेक्ट बेस हायरिंग शुरू कर दी। सो नापा रेपर्टरी के लिए कई सारे थिएटर करते रहे, अभी भी करते हैं, प्लेस करते रहते हैं। फिर टेलीविज़न पे कुछ काम किया, कुछ 2-3 सोप्स किए, सीरियल किया, 2-3 ऐसे एक दो सीरियल किए। 2-4 नाम भी मेंशन करते जो पहला सोप था वो था शाइस्ता शाइस्ता, और इस तरह से अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट जो किया था वो तेरी मेरी जोड़ी के नाम से एक सीरियल आया था, जियो पे गालिबन चला था। और उसके अलावा थिएटर, ज़्यादातर थिएटर होता रहा है। दास्तान गोई जो है वो हमने कोई 2.5 साल पहले शुरू की थी, 2014 में, और पहली परफॉर्मेंस हमारी T2F में हुई थी। और दास और क्या बताऊँ, थिएटर का बहुत पैशन है। थिएटर तो मुझे लगता है सारी ज़िंदगी करते रहना। थोड़ा बहुत अपने इंटरेस्ट और हॉबीज से रिलेटेड, सेपरेट फ्रॉम थिएटर। सेपरेट फ्रॉम थिएटर, अपार्ट फ्रॉम योर वर्क। भाई मेरी ज़िंदगी थिएटर है। मैं लिटरेचर पढ़ना, लिटरेचर ओके, एट मोस्ट ये कहा जा सकता है कि हाँ लिटरेचर, लेकिन लिटरेचर मेरा ओढ़ना बिछोना है, उसी से मेरा सारा काम भी होता है। थिएटर भी उसी से निकलता है, उसी से इंस्पायर होके होता है, या तो इंस्पायर होके नहीं भी होता तो भी इंस्पिरेशन के लिए तो चाहिए ही ना काम। कहानी जो है वो बुनियादी, जो मेरा सबसे गहरा रिश्ता है वो कहानी से है। सो वो किसी भी फॉर्म में हो, भले वो फिल्म की फॉर्म में हो, वो मीडियम के थ्रू हो, वो थिएटर के मीडियम के थ्रू हो, वो किताब के थ्रू हो, वो इवन शायरी में भी अगर कहानी हो, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो मेरा ज़िंदगी में मैं शायद क्लोज फील करता हूँ वो कहानी से करता हूँ, आई गेस। तो आपका कभी पढ़ाने का भी मूड नहीं हुआ? कहानी पढ़ाने का मतलब कभी अगर या नापा में मैं पढ़ा रहा हूँ। नापा में अच्छा। जी नापा में मैं तो 2012-13 से पढ़ा रहा हूँ नापा में। अच्छा। हाँ, और एक्टिंग और थिएटर हिस्ट्री पढ़ाते रहते हैं, जो भी थोड़ा बहुत वहाँ पे सीखा है, और वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ और लोगों से सीखने का जहाँ पे भी मौका मिलता है वहाँ पे कर लेते हैं। मसलन बहुत हमारा, मेरे ख्याल में बहुत मेजर जो लर्निंग एक्सपीरियंस रहा नापा से फ़ारिग होने के बाद, वो रहा जब इंग्लैंड से एक डायरेक्टर आए थे, ग्रेगरी थॉमसन। उन्होंने शेक्सपियर के एक प्ले उर्दू में डायरेक्ट किया था हमारे साथ, हालांकि उनको उर्दू नहीं आती थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस था। फिर बहुत, और उसके अलावा भी छोटे छोटे कोर्सेज जहाँ जिधर मौका लगता है उधर करने के लिए तैयार रहता हूँ। अभी जर्मनी जाना हुआ था रिसेंटली थिएटर वर्कशॉप के सिलसिले में। सो या और व्हाट एग्जैक्टली इज दास्तान गोई इन योर सिंपल टर्म्स? दास्तान गोई बुनियादी तौर पे एक ज़बानी बयानिया है, और मतलब अंग्रेज़ी में बोला जाए तो ओरल ट्रेडिशन है, ओरल स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन है। दास्तान का मतलब एपिक, और गोई का मतलब सुनाना, कहना, टू टेल।
तो सुनाई जाती है किसी लाइव ऑडियंस के सामने। अगर लोग लिखते भी हैं कोई दास्तान तो उसका मकसद ये है कि वो उसको लिखा पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है बल्कि सुनाने के लिए जा रहा है। जैसे आप कभी कोई खेल लिखते हैं, शेक्सपियर खेल लिखता था तो वो इसलिए नहीं लिखता था कि उसको क्लासरूम में बैठ के स्टडी किया जाएगा, उसका मेन जो मकसद है वो ये है कि उसको परफॉर्म किया जाए। तो इसी तरह से दास्तान भी एक परफॉर्मेंस की चीज़ है। उसको अगर कोई कलमबंद भी करता है तो वो यही सोच के करता है कि उसको सुनाया जाएगा। तो कई सारे ऐसे दास्तान को गुजरे जो कि मतलब फिलवदी सुनाते थे, एक्सटेम्पोर सुनाते थे, कई सारी चीज़ें वो पहले से तैयार करके रखते थे। तो ये है एक तो बात। फिर जो दास्तान हम जिस जिस दास्तान के रिवायत से हम वाबस्ता हैं और दास्तान अमीर हमज़ा की जो हम बात करते हैं, तो दास्तान के बारे में उमूमन कहा जाता है कि दास्तान के 4 अनासिर हैं: रज़्म, बज़्म, शायरी और अय्यारी। रज़्म यानी कि जंग, बज़्म यानी कि महफ़िल, दोस्त अय्याशी भी कह लें उसको, शादी कह लें, खुशी कह लें। रज़्म, बज़्म, शायरी यानी कि जादूगरी और अय्यारी यानी कि ट्रिकरी, धोखा देकर बेवकूफ़ बना देना या कुछ इस तरह। ये 4 अनासिर हैं जो कि हमारी दास्तान में पाए जाते हैं। और दास्तान अमीर हमज़ा बर्र सग़ीर में ख़ास तौर पे और भी कई सारी दास्तानें सुनाई जाती थी, लेकिन ये दास्तान ख़ास तौर पे इसको ज़्यादा सराहा गया, तो बहुत लोगों ने पसंद किया गया। और ये दास्तान उर्दू में जब होना शुरू हुई तो उसको बहुत तवालत मिली, बहुत सारे लोगों ने इसको सुनाया। बहुत बड़े बड़े जो नाम आते हैं वो शेख तसद्दुक़ हुसैन हैं या मोहम्मद हुसैन जा जो आखिरी बड़े दास्तान को गुज़रे दिल्ली के, वो थे मीर बाक़िर अली, जिनका इंतकाल कोई 1925 में हुआ था या 1924 ऐसे ही इसी अशरे में हुआ था। और उस वक्त तक हमारी दास्तान ज़वाल पज़ीर हो चुकी थी। मीर बाक़िर अली का तो अशरफ सुबही साहब ने उनके आखिरी दिनों में अशरफ सुबही साहब ने एक अपनी मुलाकात रकम की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मीर बाक़िर अली जब उनसे मिले तो उनके हाथ में एक पोटला था और साथ में एक बस्ता था। तो बस्ते में तो वो उनकी अपनी तहरीर करदा कुछ छोटी छोटी कहानियाँ सी थी, दास्तानें सी थी जो वो बेचते थे किताब की सूरत में। कुछ किताबचे ही कह लें, वो छोटे छोटे जुज़, और साथ में पोटले में उनके छालियाँ होती थी। तो वो छालियाँ बेचने का काम करना शुरू कर दिया था उन्होंने। उनको पूछा कि भाई क्या दास्तान वास्तान छोड़ दी? तो उन्होंने कहा अब कहाँ कब्रिस्तान में जाकर सुनाऊँ, जिसको देखो ज़बान से ना आशना है। तो वो तो इतने बेचारे दिल बर्दाश्त था उस वक्त तक हो चुके थे। तो अभी हमारी बहुत अदना सी कोशिश है कि दास्तान की रिवायत को ज़िंदा किया जाए। और ये भी सच्ची बात यह है कि हमें नहीं मालूम उतना ज़्यादा कि दास्तान उस ज़माने में किस तरह सुनाई जाती। हमारी कोशिश तो ये है कि हमारे अदब का ये बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है जिसको लोगों तक पहुंचना चाहिए, और लोगों को उससे लोग कहानियों को भूल गए हैं। अमर अय्यार वग़ैरह ये सब नाम शायद लोगों ने सुन रखे हों, लेकिन ये क्या थे, क्या किस तरह से इनके किस्से सुनाए जाते थे, क्या होता था, अमर अय्यार क्या काम करता है, अमीर हमज़ा क्या करते हैं, लक़ा कौन है वग़ैरह, ये सब जो हमारे बुनियादी किरदार थे जो कि एक ज़माने में जिनको बहुत मकबूलियत मिली, वो अब भूल गए हैं लोग। तो हमें लगता है कि ये एक तो ये कि ज़बान बहुत खूबसूरत लिखी गई है, फिर ये कि ये इन किरदारों से हमारे अपनी ख़ित्ते के पैदा करता किरदार हैं। कहने को तो वो अरब से आए हैं, लेकिन वो सब उर्दू बोलते हैं, और बल्कि उनका रहन सहन भी जो है वो बिल्कुल यूँ कह लीजिए कि हमारे बर्र सग़ीर से ज़्यादा मिलता जुलता है। अरब का उसमें दाखिलत कम है। तो ख़ास तौर पे तिलिस्म होशरुबा तो एक सल्तनत का नाम है जिसमें काफ़िर जादूगर रहते हैं, लेकिन जितने जादूगर हैं वो सब ऐसा लगता है जैसे कोई लखनऊ के ही रहने वाले लोग हैं जो कि उसी तरह की ज़बान बोलते हैं, उसी तरह की बातचीत है, उसी तरह का उनका रहन सहन है। अभी जिस तरह ये पूरे दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं, लोग आते हैं, लोग सुनते हैं, तो रिएक्शन ज़्यादा जनरल पॉपुलेशन में क्या रहा है रास्ते? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी जगह पे परफॉर्मेंस की हो और वहाँ से हमें कोई दाद ना मिली हो या लोगों ने सराहा ना हो। कई बार ये यकीनन ज़बान बहुत मुश्किल है और समझने में तक मुश्किल भी होती है, और हम भी कोई ऐसे ज़बानदान तो नहीं है,
और हम भी मुश्किल से ही उसको समझते हैं और समझ के करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कि उसकी खूबसूरती ऐसी है और कि लोग महसूस हुए बगैर रहते नहीं, लोगों को बड़ा मज़ा आता है। मैंने सिर्फ मतलब हमने हमारी तो कोशिश रही कि जितने यंगस्टर्स हैं उन तक पहुंचाई जाए, और हमने कराची यूनिवर्सिटी में परफॉर्मेंस की, हबीब यूनिवर्सिटी में परफॉर्मेंसेस की हैं, आखान यूनिवर्सिटी में परफॉर्मेंस की हैं, लम्स में की है। सो कहीं ऐसा नहीं हुआ कि जो है वो लोगों को लगा कि यार ये पता नहीं क्या चीज़ हो रही है। सबने बहुत मज़ा किया, बड़े मज़े से सुना, और बल्कि एक बार जिस जगह पे कर लिया उस जगह पे उमूमन होता है कि हमें दोबारा बार बार बुलाया जाता है उसी जगह पे। ये बल्कि एक मिनट, ये दास्तान गोई को अगर हम कंपेयर करें विद कव्वाली, क्योंकि कव्वाली का भी बहुत पुराना ट्रेडिशन रहा है अमीर खुसरो से, लेकिन वो एज सच ब्रेक नहीं हुआ बीच में। एक तो आपने बताया ठीक है, क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि फ़ारसी से जब उर्दू में ट्रांसलेशन हुई और फिर ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में जब इंग्लिश को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई तो हमारी सारी जो है वो हिस्ट्री वहीं पे कट गई। हाँ, तो वहाँ से पीछे से सारा ख़त्म हो गया। असल में कुछ अब ये वैसे तो ये स्कॉलरली बात है, बड़े आलिम ज़्यादा शमसुर फ़ारूक़ी ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकेंगे। ये भी कहना चाहिए कि हाँ, शमसुर फ़ारूक़ी के सर सेहरा जाता है दास्तान गोई को सही मानों में दोबारा ज़िंदा करने का, क्योंकि वो एक इस कुर्रे अर्ज़ पर वाहिद शख्स हैं जिन्होंने दास्तान अमीर हमज़ा की 46 जिल्दें पढ़ रखी हैं, जिसमें से हर जिल्द जो है वो 1000 सफ़ात पर मबनी है, और कई जिल्दें तो वो 2-3 बार पढ़ चुके हैं। फिर उसके ऊपर वो तनकीद भी लिख रहे हैं, 4 वॉल्यूम्स लिख चुके हैं, 5वां वॉल्यूम लिख रहे हैं। सो हाँ, एक जो बात है वो ये कि जो कॉलोनियल ईरा का जो हमारे ऊपर असर रहा वो ये रहा कि हमारी जितनी भी अदबी रिवायात थी उसको हमने कहा कि नहीं, ये तो बहुत बेकार सी हैं। मसलन दास्तान भी उसमें एक चीज़ है। हमारे यहाँ एक जहनों में ये ख्याल पैदा होना शुरू हुआ कि भाई जो वो लोग थे, जो वो जितने भी अदीब थे, शायर वगैरह थे, वो तो अय्याशियों की ज़िंदगी गुजारते थे, वो तो क्या गुल बुलबुल की शायरी करते थे, वो तो बेकार शायरी है। असल मानों में तो शायरी जो है वो आज कल के दौर के बारे में होनी चाहिए। इसी वजह से जो है वो अल्ताफ़ हुसैन वो ये मुसद्दस हाली लिखी गई, ठीक है ना, कि भाई आजकल के दौर के बारे में कुछ बात हो, आजकल की चीज़ें निकलें नज़्म में। अगर आजकल की चीज़ों का जिक्र नहीं है तो फिर नज़्म क्या हुई, शायरी क्या हुई। शायरी तो वर्ड्सवर्थ की तरह होनी चाहिए। गज़ल का क्या ट्रेडिशन, दो जुमलों के एक शेर, ये क्या, ये किस किस्म की बात है। सो ये हमारे यहाँ बड़ा बुरा रहा, और अपनी ही शायरी को हमने काफ़ी हद तक निगेट किया, लेकिन उसके बावजूद गज़ल की बड़ी बात ये, या और दूसरी असनाफ की बड़ी बात ये कि वो सर्वाइव कर गई। दास्तान के साथ ज़रा ज़्यादती रही। दास्तान अब ये तो इसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए और मज़ीद काम, और भी ज़्यादा काम होना चाहिए जो शमसुर फ़ारूक़ी ने किया, उससे भी आगे बढ़ के होना चाहिए कि भाई ये क्यों ख़त्म हो गई। अगर ये कहा जाए कि लोगों को लंबी चीज़ें पढ़ने का शौक़ नहीं रहा तो ये बिल्कुल गलत बात है। आज उरहान पामूक जो है वो 1500 सफ़ात का नावल लिखता है, आज भी पढ़ा जाता है, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है ये। और फिर ये भी ख्याल करना कि दास्तान जो है वो इर्तिकाई मराहिल से गुज़र रही थी, और जो कि उसकी आगे चल के जो उसको नावल बन जाना था। दास्तान और नावल दो मुख्तलिफ़ चीज़ें। नावल जो है वो पढ़ने के लिए लिखा जाता है, दास्तान सुनाने के लिए लिखी जाती है। तो अभी क्यों हुआ इसके बारे में मैं कोई हतमी बात मैं नहीं कह सकता, मैं इसका अहल नहीं हूँ, मैंने कोई इतनी तहकीक भी नहीं की है। लेकिन ये कि लोग काम कर रहे हैं। शमसुर फ़ारूक़ी साहब से हमें बहुत उम्मीद है, बेचारे बूढ़े हो गए बहुत, लेकिन मेरा ख्याल है वो अदनान जाफ़र साहब जो है वो जिन साहब के साथ करते हैं, उन्होंने शमसुर रहमान की काफ़ी की है, या वो नहीं शफ़ीकुर रहमान की थी। अदनान जाफ़र साहब नहीं, अदनान जाफ़र ने तो नहीं एक आध नहीं दफ़ा किया उन्होंने आगे ऑन से जो किया। हाँ नहीं, वो तो शफ़ीकुर रहमान साहब हैं। शमसुर फ़ारूक़ी साहब वो हैं जिनका एक बहुत अभी कुछ अर्से पहले 2005 में ग़ालिबन नावल छपा था, कई चांद थे सरे आसमां, जिसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा भी हुआ, और वो मिरर ऑफ ब्यूटी के नाम से अंग्रेज़ी में तर्जुमा, अच्छा खासा सकीम नावल है। अच्छा। और शॉर्ट स्टोरीज़ उनकी बहुत मशहूर हैं। वो तो बहुत बड़े इस वक्त उर्दू में जो सबसे बड़ा नाम आता है स्कॉलर्स में, तो वो शमसुर फ़ारूक़ी का आता है। मीर पे उनका बेतहाशा काम है। तो और कोई बात? आपने अर्ज़ किया कि आप नागा में भी टीच भी कर रहे हैं, इसके अलावा आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स का भी करंटली हिस्सा है, किस किस काम में इन्वॉल्व है? मैं नापा में पढ़ा रहा हूँ,
नापा में मैं एक्टिंग और थिएटर हिस्ट्री पढ़ाता हूँ मैं, और पार्ट टाइम जॉब है मेरी वो, मतलब मैं परमानेंट वहाँ पे नहीं हूँ। कभी ऐसा होता है कि एक ट्राइमेस्टर पढ़ाया, उसके बाद कोई ट्राइमेस्टर ऑफ ले लिया, लेकिन ये काफ़ी हद तक मुझ पे भी डिपेंड करता है कि मैं कितना फारिग हूँ। और नापा के अलावा एक तो ये दास्तान गोई का अपना हमारा काम है, वो वक्तन फ़वक्तन होता रहता है, हर महीने उसकी कुछ ना कुछ परफॉर्मेंसेज रहती हैं। फिर दास्तान गोई के अलावा कुछ काम मेरा ऑडियो बुक्स का है, तो कुछ ऑडियो बुक्स भी तैयार की जाती हैं, वो अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं। उनका क्या क्वालिटी है? मतलब ऐसी, मतलब मंटो की कहानियों को, मंटो के मज़ामीन की एक ऑडियो बुक तैयार की, एक इब्ने इंशा की इंतज़ार हुसैन साहब की कहानी हुई कुछ की, इसी तरह से और हाँ कुछ फ़िल्म के प्रोजेक्ट्स कुछ हुए, 2-2.5 साल पहले हुए थे, अब रिलीज़ होने वाले हैं। कुछ फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है, एक जीवन हाथी के नाम से एक रिलीज़ हो रही है, और एक फ़िल्म की थी वो पता नहीं अब रिलीज़ कब होगी, बहरहाल फेस्टिवल में तो वो चलना शुरू हो गई है, गिरदाब के नाम से। उसका अंग्रेज़ी टाइटल जो है वो उन्होंने वर्ल्ड पूल किया। और दास्तान गोई जैसे जो भी इंसान करता है वो एक नेचुरल टैलेंट के थ्रू करते हैं, ऐसे सिखाई वगैरह जा सकती है, हाँ, उसी के थ्रू उसको मज़ीद प्रमोट कर सकते हैं। देखिए हम तो जो कुछ भी करते हैं उसका ख़ासा ताल्लुक़ थिएटर से है। हमने थिएटर की तालीम हासिल की है, नापा में रहे हैं, और ज़िया मुहिउद्दीन साहब से बहुत कुछ सीखा है। ज़िया साहब का तो मतलब ख़ासा हमें सपोर्ट भी करते रहे हैं, और तो जो जितना हम मेरे ख्याल में एक तो ये कि सीखने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये बिल्कुल बिल्कुल नेचुरली कुछ लोग हो सकता है, कुछ लोग नेचुरली अदाकारी भी कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है, सही है। लेकिन ये है कि भाई मुझे तो सीखने की ज़रूरत पड़ी और सीखने से फ़र्क पड़ता है। और हम तो मैं तो किसी को फॉलो तो नहीं कहना चाहिए कि मैं किसी को फॉलो कर रहा हूँ। हमारा तो मकसद ये होता है कि हम दास्तान गोई ऐसे कहानी सुनाने के जो बुनियादी उसूल हैं उनको सामने रखते हुए कि भाई लोगों को किस तरह से कहानी सुनानी चाहिए, वो सबसे बेहतर हमें जो लगता है वो तरीक़ा है, जो भी है हम उसको अपनाते हैं। मतलब हमने दास्तान गोई मैंने और नज़रुल हसन ने साथ शुरू की थी, और हमने यहाँ पे दानिश हुसैन साहब आए हिंदुस्तान से, जो कि हिंदुस्तान में दास्तान गोई को ज़िंदा करने की कोशिशों में लगे हुए हैं आज भी, दानिश हुसैन महमूद फ़ारूकी। तो वो लोग आए, उन्होंने आके दास्तान गोई पे एक वर्कशॉप किया जिसमें एक तरह का तारुफ था कि दास्तान गोई क्या होती है। दास्तान गोई के ऊपर एक लेक्चर था उनका, उन्होंने दास्तान गोई के ऊपर एक किस्म का लेक्चर दिया कि दास्तान अमीर हमज़ा क्या है, दास्तान अमीर हमज़ा के साथ क्या हुआ, कितनी जिल्दों पे मुनहसर है वो। फिर उन्होंने एक परफॉर्मेंस की, और उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद हमने कहा कि हमें भी करना चाहिए ये काम, तो थोड़े अरसे बाद वो शुरू कर दिया। ठीक है, और आपने दास्तान गोई की माजी से रिलेटेड चीज़ें बताई, प्रेजेंट बताई, अब इसको फ्यूचर में कैसे देख रहे हैं? हाँ, फ्यूचर में मुझे लगता है कि अभी तो इसकी बहुत मांग है, और हम बहुत खुश हैं इस बात से, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि फैलनी चाहिए, मतलब सिर्फ हमें नहीं करनी चाहिए दास्तान को, ये हम 4-5 लोग ना हों कि ये भाई ये लोग हैं जो कि दास्तान करते हैं। मैं कहता हूँ कि हर जगह दास्तान वो होने चाहिए जो कि खुद से दास्तानें सुनाएं, और उस काम को ज़्यादा फ़रोग़ हासिल होना चाहिए। अब ये कैसे होगा, इसका एक तरीक़ा तो ये है कि जो नापा के अपने लोग हैं, सही है, उनको ये तालीम तो दी जाती है वहाँ के लोगों को। फिर दूसरा ये हो सकता है कि कुछ वर्कशॉप्स अरेंज करवाए जाएँ। एक वर्कशॉप मैंने अरेंज करने की कोशिश की थी खुद से, लेकिन मुझसे कौन सीखना चाहता है, मेरे पास तो कोई आया ही नहीं सीखने के लिए, नहीं आया। बहुत है चाहने वाले। ओपन सच बता रहा हूँ मैं, T2F पे ओपन कॉल थी, किसी ने साइन अप नहीं किया। सो नोबडी किसी को एक अव्वल तो एक लोगों को दास्तान गोई के बारे में इतना इल्म नहीं है, दूसरा ये कि उनको लगता है कहानी सुनाने का क्या, कहानी सुना के क्या करेंगे, इससे कौन सा। मैं तो बहुत तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत पैसा कमा रहा हूँ कहानी सुना कर ही और मेरे ख्याल में और लोगों को भी सुनानी चाहिए। और बेशक मैं कहता हूँ कि आप दास्तान अमीर हमज़ा ना सुना सकें,
मगर कोई तो कहानी सुनाए। कहानी सुनाने का एक मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में एक होना चाहिए कि भाई हम हर महीने बैठेंगे और सारे स्टूडेंट्स मिलकर बैठेंगे और उनमें से जो अच्छे किस्सा वो हैं वो आएंगे और कहानी सुनाएंगे, बेशक पढ़ के सुनाएं, याद करके सुनाएं, कैसे भी सुनाएं। सो ये एक तो बुनियादी काम यही हो जाना चाहिए। दूसरा मुझे लगता है कि उर्दू ज़बान अपने आप में बहुत पीछे रह रही है, और हम उर्दू ज़बान क्या, हमारी जितनी बाकी ज़बानें हैं वो सब आहिस्ता आहिस्ता दब रही हैं, उनको फ़रोग़ हासिल नहीं हो रहा, हुकूमत की तरफ से कोई काम नहीं हो रहा। सिंधी है, पंजाबी है, पश्तो है, सराइकी, ब्रोई वगैरह, ये सारी ज़बानें जो हैं इन सब में दास्तानें मौजूद हैं, इन सब में अपने अपने दास्तान की रिवायात मौजूद हैं, और उन सब को वो न सिर्फ दास्तान की बल्कि उनके अदब की, उनकी और कई सारी चीज़ों की रिवायत हैं जिनको फ़रोग़ हासिल होना चाहिए और हुकूमत की तरफ से उसको मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिलता। हमारे यहाँ तो किसी चीज़ पे काम। Hi, my name is Laribata and I'm a visual effects artist based in London. I'm working for Double Negative. I was born and raised in Lahore, Pakistan, but most of my childhood was also spent in a town called Isakhel in Mianwali district. When I was young, I was the quiet one in my family. I would be in my quiet corner, just draw. I loved drawing. So when we were young, we moved to London and I went to study visual effects. So when I finished my studies, I went straight into professional industry at the age of 19 and started working for big Hollywood films. Little did I know I would be working for big Oscar-winning companies at that time, and here I am today, so grateful and so happy.